Welcome back to Breaking Ground. I'm Siddharth Talia. Now, days after absolute anarchy gripped Sri Lanka with angry protesters taking control of the presidential palace, burning the Prime Minister's private residence and the never-ending economic crisis, political leaders in India now continue to let politics rule over propriety. The latest is the TMC's MLA Idris Ali, who wished a similar situation in India, predicting President Gotabaya Rajapaksa's fate for Prime Minister Narendra Modi. इंडिया में तो मोदी जी का हालत भी ऐसा ही है। सब कुछ दिन के डे बाय डे ये तेल का दाम, दूसरा चीज़ का दाम बढ़ रहा, इज डूइंग नथिंग। दैट अपार्ट जो देखिए उन लोग जो वादा किया था मोदी जी अनेक पावर के आने थे वो नहीं निभाया। अभी तो आदमी नाखुश है। और वो जो वहाँ का जो राष्ट्रपति का जो हाल हुआ अभी श्रीलंका में, वो हाल तो मेरा ख्याल से यहाँ मोदी जी का हो जाएगा। मोदी जी का प्रधानमंत्री का वही हाल होगा जो हालत चल रहा है। इज़ वेरी बैड। जो इंडिया में जो चल रहा, मोदी जी टोटली फेलियर, प्राइम मिनिस्टर टोटली फेलियर। तब तो श्रीलंका में क्या हुआ उससे भी ज़्यादा शायद होगा। मोदी जी को भी भागने पड़ेगा, मोदी जी को रिजाइन करके भागने पड़ेगा। The BJP is hit back at the TMC's comments, saying that these comparisons are completely bizarre as well as misplaced. The BJP also asked the TMC to worry about the state of affairs within their party as well as West Bengal, which is governed by Mamata Banerjee. 2007 में जो आतंकवादी थे इदरीस अली, 2007 में तो आतंकवादी थे, और वो सीएम को बोलना चाहिए, क्योंकि 6,22,000 करोड़ श्रीलंका का डिपॉजिट है और पश्चिम बंगाल का डिपॉजिट है 5,82,000 करोड़। तो पश्चिम बंगाल का सीएम को कालीघाट से उखाड़ना चाहिए। वो पब्लिक घेराव करेगा सीएम का ऑफिस, पीएम को नहीं, क्योंकि पीएम इज ए फादर ऑफ द इंडिया। ऐसे बन गया कि पीएम है नरेंद्र मोदी जी है, उसलिए बहुत भारत का हर आदमी हर पब्लिक अच्छे है। The BJP also slammed the TMC for wishing upon India an economic crisis of the nature that Sri Lanka has witnessed, and said that the motivations behind these kind of comments coming from the TMC are all rooted in their hatred for the Prime Minister Narendra Modi. प्रधानमंत्री माननीय जो हैं उनके लिए अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो इससे उनकी विचारधारा पता चलती है। एक तो वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नहीं मानते, वो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते। तो इससे पता चलता है कि फेडरलिज्म के कोई मायने नहीं है। और ये देखिए घर पे ही तो आप सीखते हैं ना, तो हमने ये सब कुछ जो है वो ममता बनर्जी को करते देखा है, उसी को ये फॉलो कर रहे हैं। उनको खुश करने के लिए पार्टी के एमपी एमएलए जो कोई करना चाहे वो सारी हदें पार करते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी से असीम प्यार करती है। करोड़ों लोगों ने पंक्ति में खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है। वो किसी की दया से प्रधानमंत्री नहीं है, भारत की जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने। और आप भारत की तरक्की की तुलना हाथ से फिसलते हुए श्रीलंका से कर रहे हैं। और मुंगेरी लाल का सपना देखते कि जनता मोदी, अरे जनता अपनी सर पर रखी टोपी संभाली है, उड़ ना जाए, तेज हवा चल रही है। ये मोदी की हवा है, मोदी का तूफान है। दुनिया मोदी जी के साथ है और देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। हम तरक्की कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे और देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। ये कौन व्यक्ति है, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूं। इनके बयान पे प्रतिक्रिया देना, इनको तवज्जो देना होगा। तो ऐसी व्यक्ति, ऐसे प्रकरण और ऐसे निराधार, तर्कहीन, तथ्यविहीन बातों पर टिप्पणी देना हम लोग उचित नहीं मानते हैं। हम लोग राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं। कोई स्थानीय पार्टी का संकीर्ण विचार वाला व्यक्ति ऐसा बोलता है, उसका नाम तक लेना हम उचित नहीं मानते हैं। देश के प्रधानमंत्री के साथ देश के 130 करोड़ लोग हैं। ऐसी बयानबाजी, ऐसी टिप्पणियां लोग करते रहें, ये हाशिए के लोग हैं। एक के बाद दूसरा जनरल इलेक्शन, उससे बड़े बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जनता सरकार बनाने का काम कर रही है। और इससे निराश और हताश तमाम ऐसे लोग जो इस तरीके से मिथ्या अनर्गल प्रवंचन कर रहे हैं, इनको अपनी अपनी चिंता करनी चाहिए।
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता को अटूट विश्वास है और लंबे समय तक इस देश को मोदी जैसा सक्षम नेतृत्व मिलने वाला है। परेशान मत हो, ये सब स्वयं में ही अपने आप विनाशकारी तत्व हैं, अपने आप में ही सब समाप्त होंगे। Now, the TMC is not the only party that has been drawing comparisons between what's happening currently in Sri Lanka with the economic situation here. In India, the Congress party has done the same, with its leader, Udit Raj, making similar comments. Let's listen into what he said. I made a tweet expressing my concern that at some point of time, situations were unlike India. In Sri Lanka, everybody knows that Ligte fought against Sinhala and Sinhala fought against them, and then of course Sinhala versus Christian, Muslim, and this led to unemployment and inflation, and also Sri Lanka landed up in big debt, and that finally led to a chaos situation. So it's a warning for us, and of course Sri Lanka is our neighboring country. We must be concerned about it. Now, there are multiple factors that have contributed to the current crisis in Sri Lanka, and that includes serious economic management on the part of the President Gotabaya Rajapaksa as well as the former Prime Minister Mahinda Rajapaksa, the excessive reliance on China and the mounting external debt of Sri Lanka, which now makes up for about 57% of its GDP. These have all, in fact, led to a situation that has, in fact, created the kind of economic crisis and political crisis that Sri Lanka is today witnessing. Now, Times Now has been covering the situation on the ground in Sri Lanka. Here's a list of comprehensive reports that have been sent by our reporter there, Priyank Tripathi, who's been in Sri Lanka for quite some time and has brought us this on-ground perspective of why the situation is the way it is in the island nation. Thousands of people who are coming to observe what had happened here on Friday, and not even that, the biggest heritage for the people of Sri Lanka, which is the President's house. They have been attempted by these protesters to block the passages so that their heritage can be protected. These are the monks who were part of the protests, the angry protests which happened here, and these are the students who have also covered this area, which leads towards the suit of the President of Sri Lanka. The message has also been put in here. They are people. So what is the message which you want to give, and why this area has been blocked? Isn't that attempt to protect the heritage? Yeah, we are trying to protect the building. This is about 400 years old building with historic items. So we are trying to protect these items. All the people wants to see this place. Also, all the people are rushing to this place. So we are trying to take the control of them, and we are trying to show all of them the place with some sort of control without damaging this building. So also, without damaging the building, there has been an attempt. They have been working in shifts. These are the second shift in people who have been sitting here. Although on the other side, there's a presence of the local police, which is also seen here. They have been, observing. They have been a mute spectator, and looking at whatever is happening has also been one of the prime focus for these individuals. Inside the palace, inside the president's house, the police officers are also there, and there are people who are coming to see that how the heritage used to look like. And on the same side, there happened an attempt to protect the heritage of Sri Lanka till the time the situation can be brought under control. The violence which happened inside the president's house in Colombo, now there are people of Sri Lanka who are cleaning this particular area, because they are saying that this is their property, it belongs to the people of Sri Lanka, and certainly things should not go out of control, and they will be protecting this area. On one side, there are images, very disturbing images of the violence which happened here. On the other side, you have visuals of individuals who are cleaning this area. This is a
very old structure. This is apparently made around 300 years back. This was made by the Dutchess, and looking at the architecture, it's quite clear that the president was staying here. But since Friday, this is a place which has also come up for the onlookers who have been arriving here continuously. There are lakhs of people who have already visited here. Apart from the visuals of the violence and the vandalism which happened here, there have been security cover which has been also given silently by the police officials. The STF officers are already here. But on one side, what happened here is certainly very shocking for them. Also, they wanted to give a message and throw out the president of this country. But on the other side, they are also trying to protect this heritage which has been there since, centuries with the people of Sri Lanka. हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है। कोलंबो में की ये तस्वीरें हैं और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि गोटाबाया राजपक्षा जो कूटनीति में काफ़ी ज़्यादा माहिर माने जाते हैं, कई तरीके के उन्होंने चीज़ें की। अपने जो कैबिनेट के लोग थे उनको इस्तीफा दिलवा दिया, खुद नहीं दिया। प्रधानमंत्री को इस्तीफा दिलवा दिया, जो उनके भाई हैं जिन्होंने खुद गोटाबाया राजपक्षा को यहाँ का राष्ट्रपति बनाया था, उसके बाद भी वो यहाँ से नहीं हटे। वहीं दूसरी तरफ अपना जो राष्ट्रपति भवन वो छोड़ के गए हैं, जिस तरीके से भागे हैं, उससे चीजें साफ तौर से नजर आती हैं कि आने वाले दिनों में श्रीलंका के लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या होगा। एक सरकार रहित जो देश होता है, वैसी स्थिति आ चुकी है श्रीलंका में, जहां पे एक ही वर्ग नहीं, हर वर्ग के लोग आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो यहाँ पे आ रहे हैं और एक एक कमरे में जाके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या है। अब ऐसी स्थिति में जब 13 तारीख को गोटाबाया अगर इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं, इन सब चीजों से जब पर्दा हटेगा तभी जाके एक साफ हो पाएगा कि आखिरकार क्या है। लेकिन जो यहाँ के संसद के जो सभापति है, जो स्पीकर हैं, उनका कहना है कि अब जो सर्वदलीय की सरकार है वो चलेगी यहाँ पे, लेकिन लोगों के लिए क्या होगा। After what happened on Friday, now the images are quite clearly showing that there was a vandalism which happened here. But soon after that, there are thousands of all these Sri Lankan people who have come here. And right now, in early morning, these people are resting because this is their property. But on the other side, there are a group of individuals who are cleaning this area because this house which was given to the president is a very heritage building, and this is the heritage for these people. That's why they are protecting it. You are cleaning it. This belong to people of Sri Lanka. That's why. Yes. This is belong to our people. This is our country, our assets. So we would like to clean. So this is the sentiment which these people are carrying. Look at them. They are cleaning it all across. But on the other side, there are onlookers also who are trying to see through whatever has been left at this location inside the palace of the president's house in Colombo. Priyank Tripathi in Colombo for the Times Network. That was Priyank Tripathi reporting from the Sri Lankan capital. We'll slip into a short break for the time being. We'll come back with more on the other side. Stay tuned.